DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम। व्हाट इज़ अ DNS? ये जानने से पहले चलिए थोड़ी सी नोज़ की एनाटॉमी समझते हैं। इन दिस नोज़, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड रूट ऑफ द नोज़, दिस इज़ कॉल्ड टिप ऑफ द नोज़। इन दोनों को हम बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एला ऑफ द नोज़ एंड दिस पोर्शन separating these two nostrils is called columella, and the cartilaginous part inside the nose that separates the nasal cavity into two half, left and right, is called septa, septum of the nose. ये सेप्टा हमारे नेजल कैविटी को अंदर से दो हाफ में डिवाइड करता है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। नाउ इफ दिस सेप्टा फॉर एनी रीजन डेविएट्स टू एनी ऑफ द साइड, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, राइट? This deviation can be of various types like C-shaped deviation or S-shaped deviation or anterior septal dislocation or septal spur or thickening of the septum. तो हमने क्या क्या टाइप्स बोले? C-shaped deformity, S-shaped deformity, anterior septal dislocation, septal spur और thickened septum. Here septal spur माने sharp deviation in the septum. So, what may be the causes for this deviation or this DNS? It can be either congenital, means pregnancy trauma during the pregnancy period, or it can be any type of trauma like road traffic accident or boxing. It can cause deviation of the nose to any of the side. Now, if a patient comes to us with DNS, then what are the signs and symptoms he will be presenting? So, as the patient nasal septum is deviated to one side, means he will have unilateral nasal obstruction, which is followed by headache, hyposmia, rhinorrhea, means nasal discharge, vulnerable to epistaxis or snoring like symptoms. Now, what are the signs that we can find in the patient? First one will be deviation of the septum on one side, and second will be compensatory hypertrophy of the inferior turbinate on other side. इसका मतलब ये कि जब नोज़ का सेप्टम एक साइड पे डेविएट होगा तो दूसरा साइड का नेजल कैविटी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से द inferior turbinate will have some space to expand on that side, so there will be compensatory hypertrophy of the inferior turbinate on other side. Now, as a doctor, what are the investigations that you will do on the patient to confirm the diagnosis that it is a case of DNS? First one will be anterior rhinoscopy, जिसमें हम पेशेंट के कौन से साइड पे डेविएशन है वो देखेंगे. Second is X-ray of the nose and paranasal sinus in occipitomental view to exclude the differential diagnosis. Now, the most important thing, patient को हम treatment क्या देंगे, right? तो since it is a surgical case, तो इसमें कोई medical treatment तो होगा नहीं जिससे ये ठीक हो जाए. So, there will be either surgical treatment, और अगर कोई sign and symptoms नहीं है patient का, there is just a mild deviation, then we will not do any treatment. In short, no sign and symptom means no treatment. But if the patient is facing any difficulties like nasal obstruction, headache, snoring, rhinorrhea, epistaxis, insomnia, hyposmia, then in that case we have two treatment plans, means two surgical plans. First one being septoplasty and second one is submucosal resection, also called SMR. So the question is, which surgical plan is best? So here both the surgical options have their own pros and cons. Like septoplasty, it can be done at any age group, but submucosal resection can only be done at people with above 17 years of age. It is because below 17 year it is a growth phase, जिस पे हमारा facial structure, bones and cartilage grow होता है. So if we do SMR before 17, then there is a high chances कि patient का कोई facial deformity, nose deformity ऐसा कुछ हो जाए. And on top of that, septoplasty is a better option as it has less complication. इसमें हम बस डेविएटेड पार्ट को कट करके छोड़ देते हैं. बट इन सब म्यूकोजल रिसेक्शन आउटकम में बी गुड, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकता है. इट इज़ बिकॉज इन SMR हम डेविएटेड पार्ट को भी कट करते हैं, म्यूकस को भी कट करते हैं, एंड वी ऑल्सो कट सम पार्ट ऑफ द बोन, ड्यू टू विच SMR becomes more complicated surgery compared to septoplasty. So in short, septoplasty is good, but SMR has better outcome. So we choose the surgical plan according to the patient age and their condition. Now, lastly, what are the complications of this surgery? Complications can be divided into two parts, internal complication or external complication. In external complication, there can be deformity of the face and nose, like saddle nose deformity. And internal complication can be septal hematoma, septal abscess, septal perforation and adhesion.
इसमें सेप्टल हेमाटोमा का मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी सेप्टम का म्यूकोपेरिकॉन्ट्रियम के बीच में ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना, विच कैन कॉज बाइलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. दिस इज कॉल्ड सेप्टल हेमाटोमा. सेप्टल एब्सेस का मीनिंग सर्जिकल साइट पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से वहाँ पर एब्सेस हो सकता है, विच कैन कॉज फीवर एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस. सेप्टल परफोरेशन मीन्स ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेप्टम के बीच में कोई परफोरेशन हो जाना, which creates a contact between two nasal cavity. Lastly, adhesion means there can be adhesion in the nasal septum. This condition may also cause sinusitis if it is left untreated. So this is all about DNS, deviated nasal septum. I hope the video was helpful. Thank you for watching.